Affinities of peripatus or onychophoran. The features of onychophora have made it difficult to place it within any one of the 10 major phyla. The detailed study of onychophorans have confirmed that, in addition to its own peculiar feature, it has character common to three other large groups like Annelida, Arthropoda, and Mollusca. पेरिपेटस का वैसे कोई आर्थिक महत्व नहीं होता, किंतु साइंटिफिक दृष्टि से यह एक इंटरेस्टिंग प्राणी होता है क्योंकि इसमें कुछ विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं, और चूंकि इनमें कुछ विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं इस वजह से इन्हें एनेलिडा या आर्थ्रोपोडा या मोलस्का आदि किसी फाइलम में नहीं रखा जा सकता, परंतु इनमें कुछ कैरेक्टर्स एनेलिडा के समान होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स आर्थ्रोपोडा के समान होते हैं, कुछ कैरेक्टर मोलस्का के समान होते हैं। इस वजह से इसे एक योजक कड़ी के रूप में यानी एक कनेक्टिंग लिंक के रूप में जाना जाता है। रिलेशनशिप विद एनेलिडा, सम सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। Segmentation in both is homonymous. Presence of paired nephridia in almost every segment of the body. Reproductive tracts are lined by cilia. Skin is thin and flexible. Dermomuscular body wall like leech, Hirudinea. Body wall musculature is smooth and composed of circular, diagonal, and longitudinal muscle fiber. True head is absent. Structure of the eye is same as in polychaetes. Simple eye are present rather than compound eyes. The appendages are non-jointed and hollow like parapodia, and the appendage of peripatus is known as lobopodia. Slime glands and coxal glands correspond with similar gland of polychaetes and oligochaetes. The gut is straight with anus terminating at the end. The body is vermiform. The embryological similarities with annelids are: spermatozoons morphology resemble that of oligochaete and leeches. The cleavage is meroblastic. Gastrulation is by epiboly. The blastopore is elongated. The dissimilar features. The mouth is ventrally placed in onychophora. Heart and ostia are present in onychophorans. The appendages in onychophorans are clawed. The antennae are present in onychophoran. The nervous system is ladder-like. Tracheal tubes are present for respiration in onychophorans. True metamerism is absent in onychophora. There is a texture, velvety texture
on the skin, disposition of the gonads, and the body cavity is hemocoelomic. संघ एनेलिडा के जंतुओं के साथ समानताएं: शरीर कृमि के समान होता है, वास्तविक सिर अनुपस्थित होता है, शरीर का बाहरी आवरण पतली लचीली क्यूटिकल का बना होता है, देह भित्ति में एक स्तरीय एपिडर्मिस व उसके नीचे पेशीय स्तर पाया जाता है, पेशियाँ यानी मसल्स वृत्ताकार सर्कुलर व अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल प्रकार की होती हैं, गमन धीमा व केचुए की तरह क्रमांकुचन गति द्वारा होता है, आहार नाल सरल सीधी व नलिकाकार होती है, पॉलीकीट्स जंतुओं के समान नेत्र सरल प्रकार के होते हैं, पॉलीकीट जंतुओं के पार्श्वपादों की भांति ओनिकोफोरन के पाद असंधित खोखले ठूंठ के समान देह भित्ति से बाहर निकले पाए जाते हैं, युग्मित खंडीय रूप से विन्यासित उत्सर्जिकाएं यानी नेफ्रीडिया पाई जाते हैं, पॉलीकीट जंतुओं के समान अवपंकी व कक्षांग ग्रंथियां पाई जाती हैं, in view of the anatomical peculiarities, Grube placed the group under Annelida, and it appeared that Onychophoron has evolved from annelids, if not directly from them, from an ancestral stock from which the annelids have evolved. Affinities with arthropods. Mosley in 1874 demonstrated the relationship of Onychophoron with arthropods. The similarities or affinities are: the appendages are provided with claws, locomotion is not annelid like but takes place with the help of legs having definite musculature, jaws are modified appendages, heart is dorsal and tubular, perforated by ostia, body cavity is hemocoel and not a true coelom. There is an absence of perivisceral part of coelom. The body is covered with chitinous cuticle and is molted from time to time. The jaws are provided with striated muscles. Antennae are present. Brain is large and resemble the brain of typical arthropods, that is, the brain is bilobed. Presence of trachea as respiratory organ. Excretory organ closely resembles the green gland of Crustacea. Salivary gland
formed by the modification of nephridia. The pattern of development is similar to other arthropods. In spite of these similarities, onychophoran differ from arthropods. The arrangement of trachea is not arthropod-like. Here in each segment there are numerous permanently opened spiracles. There are no closing mechanism. Jaw is modified of second appendage and the movement of jaw operate from anterior end and proceed towards the posterior end. Formation of skin is not like that of arthropods. It has the velvety texture. Segments behind head are simple and identical. Unlike arthropods, segmentation is not distinct in onychophorans. The Malpighian tubules are absent. The legs are hollow, unjointed, and stumpy. The structure of eye is simple. Two ventral nerve cords are widely separated and they are without true ganglia. The body region or stigmata is not well developed in onychophorans, which are well developed in arthropods. संघ आर्थ्रोपॉड के जंतुओं के साथ समानताएं। श्रृंगिकाओं की उपस्थिति, नखर युक्त उपांग की उपस्थिति, उपांगों से रूपांतरित जबड़े तथा जबड़ों में रेखित पेशियां, निश्चित टांगों द्वारा गमन, टांगों में निश्चित पेशी विन्यास, देह गुहा का हीमोसील के रूप में उपस्थित होना, आर्थ्रोपोड जंतुओं की तरह क्यूटिकल में पतली काइटिन की परत का पाया जाना, वास्तविक देह गुहा सम्मानित होकर केवल उत्सर्जी व जननांगों के चारों तरफ उपस्थित यानी हीमोसील की उपस्थिति, एनालिड्स की तरह ट्रूसिलोम की अनुपस्थिति, नेफ्रीडिया से रूपांतरित लार ग्रंथियां, पार्श्वीय ऑस्टिया सहित नलिकाकार हृदय की उपस्थिति, श्वास नलिकाओं द्वारा वायवीय श्वसन, मस्तिष्क द्विपालित बड़ा व प्रारूपी आर्थ्रोपोड मस्तिष्क के समान, जननांगों की सामान्य संरचना व भ्रूणीय परिवर्धन आर्थ्रोपोड जंतुओं के समान। According to Sedgwick in 1908, there is no doubt that Peripatus belong to Arthropoda in all above mentioned characters, which are all of morphological importance. The developmental feature of Peripatus confirmed the view, but since it has got several individual or unique characteristics of its own, we place them in phylum Onychophora. Similarity with Mollusca. Slug-like appearance. Ladder-like nervous system resembling that of chitin and lower prosobranchia. Antenna is tentacle-like. संघ मोलस्का से समानताएं। शरीर स्लग के समान दिखाई देता है। वर्ग एम्फिन्यूरा के सदस्य की भांति सीढ़ी नुमा तंत्रिका तंत्र तथा स्लग की भांति दिखाई देने के कारण
सर्वप्रथम इसे संघ मोलस्का में ही सम्मिलित किया गया था, परंतु संघ मोलस्का के साथ इसकी समानताएं केवल आभासी होती हैं। अतः ये सिमिलैरिटीज़ महत्वहीन हैं। Gilding in 1826 discovered Peripatus and considered it to be an aberrant mollusk. But according to many scientists, the resemblance with mollusks are only superficial. Onychophora evolved from marine fossil onychophoran-like organism Archaea pedunculata from mid-Cambrian period about 520 million years ago.